अरे, बड़ी लंबी उम्र है यार आपकी। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आई वांना शेयर सम इशू। लास्ट पार्ट में हमने जो कंटेनर को रिमूव किया था उसके साथ सारा का सारा डाटा भी रिमूव हो गया। वो तो अच्छा हुआ, इट वाज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर रियल सिनेरियो होता तो क्लाइंट तो हाथ धो के पीछे पड़ जाता। इस डाटा को हमें सेव करना पड़ेगा और इस डाटा को ऐसी जगह स्टोर करना पड़ेगा कि कंटेनर रहे या ना रहे, लेकिन डाटा जरूर सेफ रहे। तो चलिए, लेट्स लर्न हाउ टू persist data with RPM. Hey guys, Pankaj Nara this side and it's time to learn with RPM. In last part we saw how to create container with the help of images. We also saw that how to remove those containers. But here you need to take care of one thing, that once we remove the container, its data also removed. We can solve this issue with the help of bind mounts and volumes. दोस्तों, अगर आप पूछना चाहते हो व्हाट इज वॉल्यूम, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वॉल्यूम इज ए मैकेनिज्म टू परसिस्ट डाटा जनरेटेड बाय डॉकर। अगर आप पूछना चाहते हो व्हाई वी यूज वॉल्यूम, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी नीड वॉल्यूम टू डिकपल कंटेनर फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस बाय अटैचिंग वॉल्यूम। अगर आप पूछना चाहते हैं कि वॉल्यूम को अटैच करने से क्या फायदा हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आफ्टर अटैचिंग द वॉल्यूम there will be no impact on data even if we remove that container, and we can use that data for future purposes. अब चाहे उस कंटेनर का सर्वनाश हो जाए, लेकिन वो स्टोरेज डिवाइस जो उसके साथ अटैच्ड है वो उसके साथ चिता पे नहीं जलेगी, वो जिंदा रहेगी और उसके अंदर जो स्टोर्ड डेटा है उसकी सहायता से वो किसी नए कंटेनर को जन्म भी दे सकती है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा करने से स्टोरेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ डिस्क स्पेस बेवजह खाली रहेगी। तो मैं बोलूंगा जी नहीं, that volume can be shared between two or more containers. अगर आप बोलेंगे कि हम कंटेनर के साथ वॉल्यूम को रिक्वायरमेंट के अनुसार ही अटैच करेंगे, तो मैं फिर से बोलूंगा जी नहीं। You can attach volume just while creating container, not later. अगर आपको मेरी बोली हुई किसी भी बात से जरा भी कंफ्यूजन है, डोंट वरी, क्योंकि जब हम लैब में वॉल्यूम से रिलेटेड कमांड्स यूज करेंगे आपकी सभी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। वी आर गोइंग टू उबंटू मशीन नाउ एंड here we will learn how to create volume, how to list volume, how to remove volume, how to attach volume, how to share volume among the containers. So I hope you are ready with that instance where Docker is installed. दोस्तों, वॉल्यूम के कंसेप्ट को हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इमेजेस को चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड docker images. No image is there. Let's check container now. Docker container ls-a. Perfect. No container as well. Now let's go with today's topic, which is related to volume. Here is a command docker volume -help. यहाँ पे आपको वॉल्यूम से रिलेटेड सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए इनको एक बार समझ लेते हैं। Create for creating volume, inspect for getting detailed information, ls for listing volumes. Next is prune. It will remove all unused volumes. This is very important and we will discuss in a separate part. And here is rm. With the help of this, we can remove one or more volumes. First of all, let's create volume. Docker volume create rpn-volume. This is the name of our volume which we are going to attach with container. Now list the volume with the help of docker volume ls. And here is our volume. अब मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। docker volume inspect rpn-volume. This is the mount point of volume. दोस्तों, आप इस वॉल्यूम को locally edit नहीं कर सकते. So here our data is more secure. Now let's create Jenkins container. Last time we used a command
डॉकर रन जेनकिंस। आज यार एक तो अपने कंटेनर का नामकरण कर देते हैं, उसके लिए आपको यहाँ हाइफन हाइफन नेम लगाना है बस, जेनकिंस 1। सो वी आर गोइंग टू यूज जेनकिंस 1 एज ए कंटेनर नेम। अब इसके साथ वॉल्यूम अटैच करेंगे। लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम डॉकर हब। लेट्स सर्च जेनकिंस। Let's go down. Here we can see command related with volume. चलिए इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि उबुंटू मशीन में इसको पेस्ट कर सकें। हाइफन वी और वॉल्यूम का नाम rpn हाइफन वॉल्यूम कोलन और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों ये सोर्स पार्ट है और ये डेस्टिनेशन पार्ट, राइट। दोस्तों आज हम जेनकिंस का कंसोल भी ओपन करेंगे, इसलिए एक काम और कर लेते हैं। लेट्स एक्सपोज पोर्ट फॉर दिस कंटेनर। अगेन गो टू द डॉकर हब, कॉपी these ports and paste here. This port is for local system and this one for server. These ports are related with APIs. We will understand this more deeply in networking part. Okay guys, now this is our final command. अब अपना Jenkins डाटा स्टोरेज के लिए ये लोकेशन यूज करेगा and which is inside the container and it will be controlled and managed by Docker itself. Enter. Guys, here is the initial admin password for Jenkins. We are going to use it at Jenkins console. You can see here we are all set with container. Let's use a duplicate session और देखते हैं कि Jenkins container की situation क्या है. Here is container which is up. This is ID and this is the name of container. These are the ports that we inserted in command. जैसे हमने वॉल्यूम को इंस्पेक्ट किया था, ऐसे ही हम कंटेनर को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं. Docker container inspect Jenkins 1. Here we can see all information about container. Here is the volume that we created and this is Jenkins home for destination. Now go to Chrome to get Jenkins console. Here is the IP and port. Here is Jenkins console. यहाँ वो पासवर्ड पेस्ट करना पड़ेगा जो हमने कंटेनर को क्रिएट करते हुए कॉपी किया था. Let's paste here. Click here. Guys, to save time, I am going to pause video till its completion. Our Jenkins is ready now. Let's create a simple job here. RPN job. Let's insert a simple command in build section. ls apply करो, save करो. Here you can see your job is ready. Now let's go back to Ubuntu machine. एक बार Jenkins 1 कंटेनर के अंदर एंट्री करके वो जॉब भी देख ली जाए. We have already gone through this command in last part, right? Now we are in Jenkins 1 container workspace. ls cd where cd Jenkins home cd jobs ls and here is job that we created. Guys, we will create one more Jenkins container and share same volume. This was the command that we used while creating Jenkins 1 container. हमें कुछ changes करने पड़ेंगे. Name of container will be Jenkins 2 this time. चलिए ports भी change कर लेते हैं क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती. 1990 and 60,000. Now this volume will be shared by both containers. Let's go to Chrome again. This time we are using 1990 port with the same IP. Enter. You can see this time authentication window is different. Just log in with admin password that we took from Jenkins 1. Guys, you can see the job that we created for Jenkins 1 is also available for Jenkins 2 as both containers share same volume. दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि नेम्ड वॉल्यूम क्या होती है तो उनको बता देना कि जिस वॉल्यूम के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया उसी को नेम्ड वॉल्यूम बोलते हैं. वी कैन ऑल्सो मैनेज दीज वॉल्यूम्स विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल. We will understand Docker file in a separate part. Apart from volumes, we can also persist data with the help of bind mount. तो चलिए दोस्तों
Here we are again at Ubuntu machine, but this time instead of creating a volume, we are going to attach physical directory with container. Guys, let's create a Nginx container this time. Let's create a directory first, mkdir -p /app /nginx /html, and this will be source physical device which we are going to attach with nginx container. Let's prepare a command to create nginx container now. This is the path of our physical storage device which is outside the container. This is the default location for nginx server inside the container. For this path you can take help from Docker Hub 2. Web server is the name of container and nginx is the image. इस बार हम ports मेंशन नहीं कर रहे, चलिए -p डाल देते हैं to map ports और डॉकर साहब अपने हिसाब से पोर्ट असाइन कर देंगे. Enter. Container is ready now. Let's start container. Docker container start web server. Enter. Docker container ls grep web server. This is the web server container. This is ID. This is API port given by Docker, and this is default web server port. Let's create a file called index.html in physical device, which is attached with nginx container. cd/app/nginx/html vim index.html. यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन लिख देते हैं, let's learn with rpn. Save and exit. Now we are going to hit nginx URL. पहले IP ले लेते हैं, if config, this is the IP. अब internal port of container, this is the port that we need. Now we are going to use a command with curl IP :port, enter. Perfect. Here we can see container is using file from physical device which is mounted to container. Let's cross check and try to edit that file. Thanks to learn with rpn. Save and exit. Again curl. Perfect. Hence proved our container is using directory which is outside of that container, I mean physical device. Guys, काफी R&D हो चुकी है. Now no container is there. अब चलिए उस वॉल्यूम को उड़ा देते हैं, I mean रिमूव कर देते हैं, जो हमने जेनकिंस कंटेनर के लिए यूज की थी. Here is a command docker volume rm rpn-volume. Enter. वॉल्यूम गायब हो चुकी है. So guys, we have discussed how to persist data with the help of volumes and bind mounts. Whether you want to this or that, it totally depends on your project preferences. If you want to keep data in Docker area, you can use volume either named or volume in Docker file. If you want to go with your own directory structure, you can use bind mount. वैसे दोस्तों Docker हमेशा volumes को recommend करता है. Okay guys, I think it's high time. Let's meet in next part where we will understand very important topic. Till then, have a nice time.